हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग विद कल्पवृक्षा। आज का जो हमारा चैप्टर है, द चैप्टर्स नेम इज पॉलिनोमियल। दिस इज चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10। नाउ आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे दैट विल बी पॉलिनोमियल्स। विल फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डू वी हैव. So we know that there is the first polynomial that is called a linear polynomial. The second one is a quadratic polynomial. The third one is a cubic polynomial. Now let's understand what are these. What are these polynomials? Polynomial is a combination of a constant and a variable. A variable which is present in any of the degrees, say 1, 2 or 3, and hence the names linear in a straight line. Linear means in a straight line. Quadratic, which means raised to the power 2. Cubic means raised to the power 3. I hope this is clear. Any of the polynomial is always represented as px, polynomial of x, or say y, however you want to define your polynomial. Now let's understand कि polynomial को अगर हम 0 से equate करते हैं तब हमारा polynomial क्या कहलाता है. When you equate a polynomial to 0, it is called a zero of a polynomial, and that changes the definition of your polynomial to an equation. Now a linear polynomial becomes a linear equation. Quadratic polynomial becomes a quadratic equation. Cubic polynomial becomes a cubic equation. Clear? ये समझ में आ गया कि हमारे definitions क्या हैं. अब हम एक एक example लेते हैं and we will try to put those examples on a graph to see that if the names are suggesting something, how does it look like on a graph and why were these names given to them. So let's take an example of a linear equation which says y is equals to 2x plus 3. जब भी आपकी इक्वेशन के इस साइड पे एक वेरिएबल है and the entire rest of the equation is dependent upon another variable. The variable on one side of the equation is called a dependent variable and the other side of the equation is called a active variable because इसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि y की वैल्यू क्या होनी है. राइट. नाउ लेट्स सी कि इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं. इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा. सबसे पहले हमें चाहिए होंगे कुछ वैल्यूज. राइट. वी विल नीड सम वैल्यूज सो दैट हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें. लेट्स अंडरस्टैंड वैल्यूज हमें मिलेंगे कैसे. सिंपल रखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए. लेट्स अंडरस्टैंड, बीच में रखते हैं 0, 1 and 2 एंड इधर -1 एंड इधर -2. Now let's understand कि ये कैसे होगा. Now this being -2, y की वैल्यू अगर x की वैल्यू -2 होती है तो हमारा वैल्यू क्या आएगा. The value will be -4 plus 3 which will give us -1. Hence x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू आती है -1. Now let's understand again कि अगर -1 रखते हैं हम x की वैल्यू तो फिर हमारी वैल्यू क्या होगी. -2 plus 3 which gives you 1. Then this gives you 1. If x की value is 0, then y की value is straightforward 3. Then अगर ये 1 है तो 2 1s are 2, 2 plus 3 is 5. If this is 2, then this is 2 plus 2, 4 plus 3, 7. Straightforward. आप अगर आप इस ग्राफ को फॉर्म करने से पहले सिर्फ y की वैल्यूज पे अगर आप एक बार ध्यान दो तो आपकी वैल्यूज जो हैं वो कंसेक्यूटिवली नेगेटिव से हॉप होकर के पॉजिटिव एंड देन उसके बाद +2 के प्रोग्रेशन में चल रही है. That gives us a clear indication that this is a linear equation. Irrespective of that, let's first understand कि इसको ग्राफ पे प्लॉट करने से कैसा दिखेगा. तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपना तो हमेशा there is a x axis and there is a y axis and the center of the graph is called a vertex. So we will start plotting the numbers. आप जब भी अपना कोई भी ग्राफ क्रिएट कर रहे हो उस समय आप ध्यान रखेंगे कि अगर बात लीनियर इक्वेशंस की हो रही है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट यू नीड टू प्लॉट इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. फ्री हैंड में कभी कभी आपके कोऑर्डिनेट्स मिस हो सकते हैं एंड दैट माइट गिव यू अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑन योर एग्जामिनर. तो हमेशा जब भी आप लीनियर इक्वेशंस पे किसी पे भी काम करें, ऑलवेज यूज अ स्केल टू प्लॉट योर कोऑर्डिनेट्स ऑन अ linear graph.
राइट। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे प्लॉटिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट आपके पास है -2, -1। लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पर -2 इज दिस, -1 इज दिस, सो -2, -1 यहाँ पर आएगा आपका। देन द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज -1, -1, सो -1, -1। देन आता है आपका 0, 3, 0, 3, 1, 5, 1, 5, 2, 7, 2, 7, राइट। अब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड द फिफ्थ पॉइंट। आई होप दिस मेड सेंस। यहां पर हमने क्या करा, एक इक्वेशन डिफाइन की है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। उसके बेसिस पे हमने क्या करा कि x की कुछ वैल्यूज ली हैं जो आपके x एक्सिस पे ड्रॉप होंगी, राइट। और हमने कुछ वैल्यूज y की कैलकुलेट करी डिपेंडिंग अपॉन अगर x की वैल्यू ये होती है तो y की वैल्यू क्या होगी। डिपेंडिंग अपॉन दैट हमने कोऑर्डिनेट्स को इस पे फॉल करा है। Once the coordinates are on the graph, you just have to draw it with a straight line and आप उसमें देख सकते हो कि आपका जो जितने भी सारे coordinates हैं, all of them are falling on a straight line, and hence this is a linear equation. It's not a theorem, it's just to understand that how does your linear equation look in the graph, and also why is it called a linear equation, right? Now let's move on to the quadratic equations. Quadratic equations हमने in depth पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर हम प्लॉट करते हैं एक ग्राफ पे तो वो दिखता कैसा है, राइट। Say assume I am saying y is equals to x square minus 3x minus 4, right? Now this is a quadratic equation. Why? Because this is a equation in x defined for y raised to the power 2, correct? Now let's understand कि इसका हम लोग ग्राफिंग कैसे कर सकते हैं। सिमिलर वे में करेंगे और जितना पॉसिबल कम नंबर्स आप रख पाओ उतना कम नंबर्स पे आप इसको देखने की कोशिश करो। Plotting lesser number of coordinates on a graph always gives you a crispy graph than plotting multiple numbers. Multiple numbers से आपका ग्राफ कभी कभी थोड़ा मिसमैनेज लग सकता है। Why? Because if you get higher values, then उसको ग्राफ पे प्लॉट करना कभी कभी डिफिकल्ट होता है, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड x की वैल्यूज अगेन हम सिंपल रखेंगे 0, -1, -2। जितना x वर्टेक्स के उस तरफ जाएंगे उतना ही वर्टेक्स के इस तरफ आएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद x की वैल्यू -2, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी -2 का स्क्वायर -3 into -2 -4। So this becomes 4 minus minus plus -4, 4 plus 6, 10 minus 4 is 6. So y की वैल्यू आएगी 6. Now let's say x की वैल्यू है -1, x की वैल्यू -1 -3 -1 -4, 1 plus 3 -4. So 4 minus 4 is 0. So y की वैल्यू आती है 0. At x is equals to 0, y is straightforward equal to -4. आई होप इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, which is why I said, क्योंकि अगर आप इसको 0 कर देते हो, this is 0, this is 0, only what remains is -4, right? When you put it as 1, what does it become? यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर -3 -4. So 1 minus 3 is -2, -2 minus 4 is -6. Now if this is 2, the what would it become? 2 2s are 4, 6, 4. 4 minus 6 -2 -4 -6. Correct. Now let's try to plot this on a certain graph. आपकी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, y की हाईएस्ट वैल्यू जो आपकी आई है that has come as 6, राइट। तो आपको जो आपका ग्राफ है उसको 6 तक ड्रॉप करना है एंड जो आपका x एक्सिस है उसको भी आपको 6 तक ही ड्रॉ करना पड़ेगा टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। ऑलवेज अगर आपको अपना ग्राफ जो है वो क्लीन दिखाना है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपना ग्राफ का जो आप नंबर प्लॉटिंग होता है
वो दोनों तरफ का सेम रखें. If the number plotting of your y-axis goes till say 7, then your y-axis also has to go till 7. Right? Great. Now we start plotting. Minus 2 comma minus 6. X comma y minus 2 comma minus 6. Minus 2 comma minus 6. This is your value. Minus 1 comma 0. Minus 1 comma 0. Y की value 0. 0 comma minus 4. 0 comma minus 4. 1 comma minus 6. 1 comma minus 6. 2 comma minus 6. राइट. यहाँ पर अगर हम एक और वैल्यू लेते हैं इसकी, लेट्स जस्ट एग्जांपल, क्योंकि आपका ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, we'll just take one more value of x, which is x is equals to 3. So this becomes 9 minus 3 3s are 9 minus 4. 9 minus 9, this becomes minus 4. So let's take 3 comma minus 4 as another value. 3 comma minus 4 as another value. Right, now we have your coordinates. We just have to plot them on the graph. Your first number is minus 2 comma minus 6. Where is minus 2 comma minus 6? Let's start with minus 2 comma minus 6, which goes till minus 1, then it goes to 0 comma minus 4, then this continues here, then this continues here, then this continues here. If you join it, this is a very flexible graph that starts from here, comes till here, and if it further plotted, this goes up till here. These sort of a graph are referred to as parabolas. Anytime if you frame a quadratic equation and if you plot the values on a certain graph, the graph will either be open upwards or the graph will be open downwards, but it will be of a U shape, upwards or downwards, and these graphs are referred to as parabolas. Right? It is a flexible graph starting from one side of the graph and going to the other side of the graph, forming a shape U. Right? Cool. Now we will move on to the next sort of equation, which is your cubic equation. And cubic equation को भी हम इसी तरीके से एक बार ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे. Now let's understand what is a cubic equation. क्योंकि cubic equation में हमारा degree of polynomial is at 3, right? It becomes really important कि question को कितना ज़्यादा crisp रखा जाए. X cube minus 4x. So y की वैल्यू आपकी y is a dependent variable dependent upon x. Now यहाँ पर जो हम फ्रेम करेंगे, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे x and y. Now अगर x की वैल्यू होती है -2, then y becomes -2 का क्यूब -4 -2. So this becomes 2 to the 4 to the 8, which is -8 plus 8, which is 0. So -2 पे आपकी y की वैल्यू आती है 0. -1. Now अगर आपकी x की वैल्यू है -1, तो 4 becomes -1. This becomes -1 plus 4, which is equals to 3. At x is equals to 0, clearly y is also equals to 0, which means जो ये आपका line है, this will be passing from the vertex or from wherever your coordinates are falling. आपके coordinates कहीं पे भी fall हो रहे होंगे, this will always pass through the vertex, which is 0, 0. Now let's understand if x is 1. If x is 1, then this becomes 1 minus 4, which becomes -3. At value 2, this becomes 8 minus 8, which becomes 0. This becomes 0 again. Right? Great. Now let's again form the graph and let's understand कि इसका graph आपका कैसा बनेगा. Same logic, जितने numbers आप इस तरफ plot करोगे, यूनिफॉर्मिटी के लिए इस तरफ भी आपको उतने ही ग्राफ्स प्लॉट करने हैं.
Now, minus 2 comma 0. Where is minus 2? Minus 2 comma 0 is here. Minus 1 comma 3. Minus 1 comma 3. Here is minus 1 comma 3. Now 0 comma 0, 0 comma 0, 1 comma minus 3, 1 comma minus 3 and 2 comma 0 and 2 comma 0. अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए. This graph starts from here, goes here, goes here, goes here and goes here. अगर आप इसको join करते हो तो this will look like again क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हमने अपना ग्राफ प्लॉट किया था तो व्हाट डिड वी से दैट जब भी आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 2 आपका जो ग्राफ फॉर्म होकर के आएगा इट विल ऑलवेज बी अ अपवर्ड पैराबोला और अ डाउनवर्ड पैराबोला. In case of a cubic equation, you will always have two parabolas in the same graph, which will form a wave, right? It starts from here, passes through the vertex, and goes up to here, right? This is how your cubic equations will represent on a graph. I hope this makes sense. We understood that how does a linear polynomial look like when plotted on a graph. A linear polynomial will always look like a straight line. A quadratic polynomial will always look like a upward or a downward parabola, while a cubic equation will always look like a wave, a connection of parabolas, right? Moving ahead into the chapter, पॉलिनोमियल्स आपका बहुत इजी चैप्टर है एंड इसमें आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आई टेल यू व्हाई. अगर आप पॉलिनोमियल्स को इन डेप्थ समझ लेते हो, देयर आर मेनी ऑफ द होराइजंस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर आफ्टर योर क्लास 10. आपके चॉइसेस ओपन हो जाते हैं. अगर आप मैथमेटिक्स को polynomials is one of the core chapters of mathematics. अगर आप 10th में polynomials को थोड़ा सा समझ लेते हो, you just know don't need to mug up everything. But if you understood it, then आपको advanced mathematics choose करने के options आपके further steps के लिए open up हो जाते हैं. Okay, so in the chapter of polynomials, we've understood how many types of polynomials do we have. We have also understood कि polynomials को zero से equate कैसे कर सकते हैं. Now what we will try to understand is कि अगर एक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं तो जो उसकी वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज को अगर हम एक पॉलिनोमियल में फिट करने की कोशिश करें तो उसका रिलेशनशिप उसके कोएफिशिएंट्स के साथ क्या होता है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. अगर कोई एक पॉलिनोमियल है से px is equals to 2x square minus 8x plus 6. Now this is a quadratic equation, right? इसका हम पहले इसको जीरो आउट करेंगे. जीरो आउट करने के बाद हमारे पास कुछ कांस्टेंट फॉर्मूले होते हैं. लाइक एक postulate है which is proven, which says sum of the zeros is equal to negative of coefficient of x divided by coefficient of x square. सेम यहाँ पर आपका बोलता है प्रोडक्ट ऑफ zeros is equals to constant term divided by coefficient of x square. Now let's understand इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि अगर हम इस चीज को जीरो आउट कर लेते हैं, now let's understand this by zeroing it out. क्या होगा? 2x स्क्वायर है minus 8x plus 6 is equals to 0, right? हमने जब अपना इक्वेशंस पढ़ा था तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, right? So what did we read? We read that इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर देंगे. 6 to the 12. 12 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो it becomes to 6 are 12, 2 3 are 6, 3 and 3. 6 and 2 becomes your two factors. So let's take 2x square minus 6x minus 2x plus 6 is equals to 0. So we take 2x, x minus
3 minus 2x minus 3 is equals to 0. Now let's understand again. यहाँ पर हमने क्या करा? x minus 3 and 2x minus 2 is equals to 0. So either x will be equals to 3 or x will be equals to 1. आपकी x की दो वैल्यूज आएंगी, 1 will be 3 and 1 will be 1, right? Now हमने दो लॉजिक आपको बताया. The logic is sum of the zeros is equals to coefficient of x is equals to coefficient of x square, right? फर्स्ट वाले पोस्टुलेट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं. सम ऑफ द जीरोस का मतलब होता है 3 plus 1 is equals to 4, right? कोएफिशिएंट ऑफ योर x, कोएफिशिएंट ऑफ x is 8. अगर हम यहां पर एंड कोएफिशिएंट ऑफ राइट, सो अगर हम यहां पर ऊपर और नीचे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस बिकम्स -8 divided by 2. So -8 is your coefficient of x and 2 is your coefficient of x square. Same thing we will do with the product of zeros. 3 and 1. Product of zeros 3 into 1 is equals to 3 is equals to constant term divided by coefficient of x square. Constant term आपका 2 है. 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने से आपका नंबर rationalize हो जाता है and you get 6 by 2. So basically 6 is your constant term and coefficient of x square is 2. So it becomes 6 by 2. तो आपका दोनों ही postulates is proving right. यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आई जस्ट एक्सप्लेन अगेन. यहाँ पर हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एग्जिस्ट करता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप जीरो आउट करते हो और उसकी वैल्यूज अगर आप ले लेते हो, सो द वैल्यूज शुड ऑलवेज कन्फाइन टू द पोस्टुलेट्स व्हिच सेज कि सम ऑफ द जीरोस, मतलब दो जो आपकी वैल्यूज x की आई हो, दोस्त को अगर हम आप उनको ऐड करते हो तो दैट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सिमिलरली जब आप उसका प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्लियर है. इक्वेशन क्लियर है मतलब आपका a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू -8 है एंड c इज इक्वल्स टू 6 है, राइट? आपकी जो ओरिजिनल वैल्यूज आई थी वो आई थी आपकी 4 और 3, राइट? तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने से पहले ही अगर मैंने इसको अपना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया होता, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो दिस ऑलरेडी बिकम्स 4x plus 3 is equals to 0, right? So the the sum of the zeros becomes 3 plus 1 4 and the product of the zeros becomes 3 into 1 3. So constant divided by 1, 4 divided by 1. आपका ये एक स्टेप आप इसको रूल आउट कर सकते थे. This wouldn't have been required if you didn't solve the original equation and you reduced it by 2. बेसिकली बस इतना सही है. So the logic says कि जब आपके पास आपकी जीरोस की वैल्यूज हो और वो इस पोस्टुलेट को थ्योरम को प्रूव करते हो, दैट इज बेसिकली आपने बोला कि दिस इक्वेशन एग्जिस्ट्स. दिस इक्वेशन का जीरो आउट निकालना इज पॉसिबल also because it fits into the postulates that have already been defined. This means this is a genuine equation, right? I hope मैंने इसमें सारे इश्यूज क्लियर कर दिए हूं, बट फिर भी मैं एक और एग्जांपल लेकर के इस चीज को सॉल्व करते हूं, राइट? सो दैट कंफ्यूजन ना हो. ये आपका कांस्टेंट रहेगा तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगी, बस मैं जो चेंज करूंगी वो चेंज करूंगी यहाँ का क्वेश्चन. सो px विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. दूसरा इक्वेशन है, we will solve it with the same method, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. आपका a is equals to 1, b is equals to 7 and c is equals to 10, right? Now let's see कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. So x स्क्वायर 10, 2 and 5, so 5x plus 2x plus 10 is equals to 0. So x plus 5 plus 2 x plus 5 is equals to 0. So x plus 5 and x plus 2 is equals to 0.
either x is equals to -5 और x is equals to -2. -5 और -2 आपके पास दो वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी हैं. Now let's understand sum of zeros करेंगे तो क्या होगा. Sum of zeros मतलब होता है आपका -5 और -2 which is equals to -7, which means negative of your coefficient of x is 7 and coefficient of x square is 1. So -7 has already justified that value of yours, right? Now product of zeros. -5 into -2 makes it +10, +10. +10 मतलब constant term divided by coefficient of x. Constant term is 10 divided by coefficient of x square is 1, which is 10 divided by 1 gives you 1. Which means that this equation is a quadratic equation जिसकी जो zero की values हैं that is fitting into the postulates of sum of the zeros is equals to negative of coefficient of x divided by coefficient of x square and product of zeros is equals to constant term divided by coefficient of x square. बहुत सिंपल है. इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी वैल्यूज जो आप उसको सॉल्व कर रहे हो, दिस इज जस्ट टू चेक इफ यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली और नॉट. एनी ऑफ द चैप्टर्स दैट आर लिंकिंग विद ईच अदर, जैसे आपका ये चैप्टर नंबर 2 है विच टेल्स यू पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स में जब आप ये इक्वेशंस को समझने की कोशिश करते हो ना, तब आप पोस्टुलेट्स को समझने की कोशिश करते हो, फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश करते हो. राइट आफ्टर चैप्टर नंबर 2 जो आपका सेकंड वाला चैप्टर आएगा दैट विल बी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. That basically deals into जो आपने linear equations अभी dependent variable and acting variable का देखा, like y is equals to 2x plus 3, y is equals to 2x plus 5 and so on. जो इस तरीके के आपके questions हैं, ये questions आपके form हो रहे होंगे दो parts में. Say you have two equations to solve. वहां पर आपको क्या होता है कि अगर आपके ये postulates आपके clear होंगे in your head, you can solve any sort of questions in a book, right? So mathematics is basically nothing to be scared of, but to understand the fundamentals. तो जैसे कि हमने आपको इस चैनल की शुरुआत में प्रॉमिस किया हुआ है कि हम हमेशा फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे, हमारा फोकस हमेशा फंडामेंटल्स ही रहेगा. एंड प्लीज डोंट वरी अबाउट एनी क्वेश्चंस दैट यू वुड वांट मी टू सॉल्व. आई विल जस्ट रिक्वेस्ट each one of the viewers to engage more with the videos and drop in your comments in the comment section and let me know what would you like to add in the video or what would you not like in the video, right? Thank you for joining.